And very good afternoon once again. So, welcome back, guys. So, in today's class, we have to begin with a new chapter, new topic that is equations. So, equation is one of the easiest topic of our syllabus. Okay, so let's see who all have joined now. Tambeshwari has joined, Hamira Pinjari has joined, Avni, Hina Kumari, Nishigar, Sodagar, Hitesh. Great. So, everyone has joined. So let us begin with this chapter, equations. So equation is basically divided into two sessions. एक session आज रहेगा, next session will be in next year, that is 2024. Yes, नए साल में हमारा next session रहेगा इसका. Okay, Shubham has joined, Paras, Renuka, Anaga, Ranjit, Vaishnavi, Anuj, Rashika, MD, Vishal, Nancy, Vidhi, Geeta, Shiva, Priyansh. Great. So everybody has joined now. Very good. So let us begin with the topic equations. तो इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम क्लास 6 से पढ़ना चालू कर चुके हैं. We have started learning this topic from class 6 and most of the things are same only. Okay, the majority of the things are same. So how to deal with this chapter? This chapter is very much easy, very much boring. एंड सबसे खास बात इस चैप्टर में क्या है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से सॉल्व होंगे. तो यूजिंग ऑप्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. तो इस पूरे चैप्टर का ट्रिक क्या है? यूज ऑप्शंस. पूरे चैप्टर का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यूज ऑप्शंस. बिकॉज इसमें ऑप्शन से आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. इट विल बी इजी टू सिंप्लीफाई. ऑलराइट, चलिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन के बारे में. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मींस इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. यानी कि जब भी हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है एंड देयर इज इक्वल टू साइन इन बिटवीन, दैट इज नोन एज इक्वेशन. इन सम चैप्टर्स देयर विल बी ग्रेटर देन साइन, it will be less than sign, so that is regarded as inequality. इट इज रिगार्डेड एज इनइक्वालिटी. लेकिन जब इक्वल टू का साइन होता है तो उसे हम बोलते हैं इक्वालिटी, दैट इज इक्वेशन. ओके, सो लेट्स टेक द सिंपल एग्जांपल गिवन हियर. x plus 2 upon 3 plus x plus 3 divided by 2 is equal to 3. This is the equation because equal to is written in between, so this is the equation. Now this equation will be true for a certain value of x. ये इक्वेशन फॉलो होगी, बट कब होगी? सिर्फ एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पे ही फॉलो होगी एंड नॉट फॉर ऑल वैल्यूज. तभी हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पुटिंग 1 हियर, अगर आप इस इक्वेशन में 1 पुट करते हैं, what will happen? 1 plus 2 divided by 3, 1 plus 3 divided by 2. On solving, you are getting 3. But in place of 1, if you keep any other number like 2, 3, 5, 10, any number, it will not get satisfied. That means only a particular number is able to satisfy. So this is known as equation. So it is basically the conditional equation, जहां पर एक single value उसको satisfy कर पा रहा. But when any values is able to satisfy the equation, जब कोई भी value उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी. दैट इज नोन एज आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, like if I am saying using a formula a plus b whole square. Now what is the formula? You must have read in the lower classes. A square plus 2ab plus b square. Now you put any set of values, it will always follow. It will always follow. So this is regarded as identity. तो जो हमेशा follow होता है उसे हम कहते हैं identity. So similarly, there is one more example given here. X plus 2 upon 3 plus x plus 3 by 2, and it is equal to 5x plus 13 by 6. This is again example. और इस example में x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, इट विल गेट सेटिस्फाइड. वो सेटिस्फाई हो जाएगा. तो जब कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई होगी, इट इज नोन एज आइडेंटिटी.
तो इस पॉइंट का ज्यादा हमारे कोर्स में रेलेवेंस नहीं है, बट एक ये बेसिक पॉइंट है, तो दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस दिस नाउ। इस चैप्टर में व्हाट वी हैव टू लर्न, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर पावर। इक्वेशन को हम पावर के हिसाब से डिफाइन करते हैं। इफ द हाईएस्ट पावर, if the highest power of a variable is 1, then it is known as the linear equation or simple equation. तो जो भी वेरिएबल इक्वेशन में है उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है, that is known as linear equation. But if the power is 2, if maximum power is 2, then it is known as quadratic equation. क्या बोलेंगे उसे? Quadratic equation. If the maximum power is 3 or degree is 3, then it is known as cubic equation. तो उसको हम बोलेंगे cubic equation. So let's write few examples. 5x plus 2 into 3 minus x is equal to 12. Now x is the variable here and maximum power is only 1 at every place. So it is known as linear equation because degree is 1, power is 1. Second is x square plus 5x plus 6 equal to 0. Now in this equation, the maximum power is 2. Always see the maximum power, not the minimum, not the lowest. Always check the maximum power. So this is known as quadratic equation. Okay. Then the third one, let's take 4x cube plus 3x square plus x minus 7 equal to 1. So again, what is the maximum power? Maximum power क्या है? 3 है. So it is known as cubic equation. Cubic equation. Okay. So in this way, we can define it. Now, first of all, we have to start with the linear equation. पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? लीनियर इक्वेशन को। तो चलिए यहां तक सब कुछ समझ आ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट कर दें अंडरस्टूड टिल हियर। क्या सब कुछ क्लियर है? एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद में आ जाएंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर ए पे। ऑलराइट, नाउ सिंपल इक्वेशन में क्या होगा? एक एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। So let's say the basic format of equation is ax plus b is equal to 0. This is a basic format of equation where a and b are the constants. That means कोई भी number हो सकता है a and b, but a should not be equal to 0. a 0 नहीं हो सकता because अगर a 0 हो गया there will be no variable in the equation. और जब variable नहीं होगा तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? ऑलराइट, सो a and b आर कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है बट a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ओके, perfect. So everyone has told all clear, understood, that's great. All right, now let's move to this example. First example says 4x by 3, 4x by 3 minus 1 is equal to 14 upon 15x plus 19 by 5. Now, जब भी आप इसको पूरे मेथड से सॉल्व करेंगे, कीप ऑल वेरिएबल वैल्यूज ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड। तो वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट? 4 upon 3x minus 14 by 15x is equal to 19 upon 5 plus 1. Now take the LCM. Left hand side LCM is 15. So 5 into 4 is 20 minus 20x minus 14x is equal to 19 plus 5 is 24 upon 5. Now we can cancel them.
So what is left? 6x upon 3 is equal to 24. So therefore value of x is equal to 12. तो x का वैल्यू आ चुका है 12. आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर एंड ये सब हम लोग कर चुके हैं इन क्लास 8 एज वेल एज 9. ऑलराइट, तो ऑल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स और इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज नंबर 1, दैट इज एक्सरसाइज नंबर ए. तो चलिए फटाफट से कुछ रैंडम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. देयर आर 9 क्वेश्चंस इन दिस. तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को फटाफट से एक बार ट्राई कर लेते हैं. सो लेट मी गिव द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. 1 का आंसर आपको फटाफट से बता देना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा. यू कैन यूज ऑप्शन ऑल्सो और यू कैन सॉल्व यूजिंग द बेसिक मेथड. इट्स योर चॉइस. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप यूजिंग मेथड सॉल्व करते हैं सो -7x प्लस 3x इज इक्वल टू 5 - 1. तो -4x इज इक्वल टू 4. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1. तो x का वैल्यू आ चुका है कितना? -1. ऑलराइट, x is equal to -1. Yes, everyone has given the answer. Option number B. Perfect. Then second one you can try yourself. Third one. Third का आंसर मुझे बता दो फटाफट. Pick up the correct value of x. x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? Just try to cancel them and solve. Cancel with the help of 15, 2 and then 3. So therefore x will be 4/3, or you can say 1/1/3. 1/1/3. Option number C. So for question number 5. 5 का आंसर मुझे बता दो फटाफट. Question number 5. 8 is the solution of which equation? उल्टा क्वेश्चन इस बार. क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन दिया है और ऑप्शन में क्या पूछे हैं कौन सी इक्वेशन करेक्ट है. नाउ ऐसे क्वेश्चन देखने में कभी टफ लगते भी हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट एट ऑल टफ बिकॉज ऑप्शन में उसका आंसर लिखा है ऑलरेडी. ऑप्शन में उसका आंसर मेंशन्ड है. सो इफ यू ट्राई यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी में आप वैल्यूज पुट करें. सो 8 प्लस 4/2 प्लस x plus 10/9. So x is 8. So you are getting value 8. Therefore, option number B is the correct answer. Yes. So Joy Benik has given the answer. Kanan, Preeti, Anuj, Divya. Great. So it's perfect. Now let's try question number 7 also. Question number 7. The solution of this equation is. Now you have to find out the solution of this question number 7. So let us simplify here. P plus 2, P minus 3, P plus 3, P minus 2, and then it is equal to P into 2P minus 5. So this is your equation. Now first step is to multiply them so that we can simplify. Multiply these two brackets first. So P square minus P minus 6. Then multiply next brackets. P square minus P minus 12 is equal to 2P square minus 5P. All right. Now let's cancel the possible values. P square and P square become 2P square. Just cancelled. So what is left? Bring on one side together. So we are getting 3P is equal to 18. 3P is equal to 18. Therefore, value of P is equal to. So P का value कितना हो जाएगा? 18/3, that is 6. Option number A. Option number A is the perfect answer.
So Anuj, Kritika, Rani has given the correct answer, option number A. All right. Next, try question number 9. Question number 9. Pick up the correct value of x. X की place पे आप क्या put करेंगे so that you get the correct answer. So x की place पे put करना है. You can try using options. You can try using options. X upon 0.5 minus 1 upon 0.05 plus x upon 0.005 minus 1 upon 0.0005, and the result should be 0. It is equal to 0. So x की place पे आप क्या put करेंगे so that you get the result 0. Okay. Now let's simplify. अब यहाँ पे अगर आप देखिए using option, if you put first option 0, 0 आप put करेंगे, so these two values जहाँ पे x available it will become 0, but overall result will not be 0, so this option will be wrong. If you put 1, अगर आप 1 put करते हैं तो भी क्या सब cancel हो रहा है? No, nothing is getting cancelled. Then only one option is left, that is 10. Try with 10. 10 upon 0.5 minus 1 upon 0.05 plus again 10 upon 0.005 minus 1 upon 0.0005. Now, if you solve this, what is the result? 1 upon 0.05, and here it is minus 1 upon 0.05. Then plus it is 1 upon 0.0005 and minus 1 upon 0.0005. So what is getting cancelled? These two values are cancelled. Next two values are also cancelled. Therefore, correct option is C. Correct option is C. Okay. So best way is to put the options. Yes, so everybody has given the answer. So somebody is requested for question number 6 also. Okay. See, question number 6 में आपके पास क्या तरीका है? Easy way, use the option. Just use the option to simplify. जैसे फर्स्ट आप ट्राई करते हैं -1, सेकंड इज 1, तो आप किससे आपको रिजल्ट मिल रहा है? दिस यू हैव टू चेक. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू विद ऑप्शंस, देन यू हैव टू सॉल्व कंप्लीटली. सो यू ट्राई बाय ऑप्शंस, एंड मैं आपको एक बार सोल्यूशन भी लिखवा देता हूं उसका. y plus 11 upon 6 minus y plus 1 upon 9 is equal to y plus 7 upon 4. Now, first step is take the LCM. क्या करेंगे? LCM ले लें. 6 and 9. LCM will be 18. So it will become 3y plus 33 minus 2y minus 2 is equal to y plus 7 upon 4. This is cancelled. Now, cross multiplication. What is left? 3y minus 2y is y. Y into 2 is 2y. 33 minus 2 is 31. Multiply by 2 gives 62. Is equal to 9y plus 63. Okay. Now you can simplify this and get the answer. Okay. So in this way, you will be able to get the answer.
So what is the correct answer? Minus 7y is equal to 1. So y equal to minus 1 by 7. Option number D. Option number D. All right. Then Ranjit is asking question number 9. You have picked wrong answer. No. Option number C is correct for 9. 10 is the correct value, Ranjit. Then KS Sanaga is asking in question number 7, A plus B and A minus B का rule apply होगा या नहीं होगा? See, values are different. A plus B and A minus B. This is not the case because P plus 2 and P minus 3 is given. Values are different. Values are different. So you cannot apply A square minus B square property because दोनों की value अलग है. So that is why you have to multiply and then solve the question. Okay. Then Ritik Gupta is asking in question number 6, minus 2k के बाद minus 2 क्यों आया? Okay, see. Here minus is common. Minus कहाँ है? बाहर है, common है. That means minus is outside this. Y plus 1. So this minus is applicable for both y as well as for 1. Okay. And then when you are solving is 18 divided by 9 is 2 and 2 into minus 1 gives minus 2. All right. सो आई थिंक जिनका बेसिक एल्जेब्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है. ओके. अनिल यादव इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम. तो जिनको एल्जेब्रा में ज्यादा प्रॉब्लम है यू कैन कनेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स क्लिनिक एंड आई विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दीज बेसिक्स, ताकि आपका जब तक ये बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर. एंड नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, जहां पर भी इक्वेशन का यूज होगा यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट. सो दिस इज द बेस चैप्टर एंड दिस बेसिक इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. चाहे आप इंटर में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, इक्वेशंस का यूज तो सभी प्लेसेस पे होता ही होता है, किसी भी सब्जेक्ट में भी होता है. इवन अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, एफएम, इक्वेशंस आर यूज्ड एवरीवेयर. और इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. ओके. तो आप सीधा सा ज्वाइन करें एंड उसके अंदर मुझे इन्फॉर्म कर दे यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर दिस अलजेब्रा सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट. ओके. Perfect. So let's move on examples. Example number 1. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 5. And if 3 is added to both, the fraction becomes 3 by 4. Then find the fraction. Now, this is a word problem. So word problem को कैसे simplify करना है, let us understand. The question is saying the denominator of a fraction exceeds the numerator by 5. तो अगर आप न्यूमरेटर को क्या मान लेते हैं? x. Let the numerator be x. Then what will be the denominator? Denominator is 5 more than numerator. So it will be x plus 5. Right? And if 3 is added to both, अब अगर हम दोनों में 3 add कर लेते हैं, so it becomes x plus 3 and second becomes x plus 5 plus 3. Then the fraction becomes 3 by 4. So this fraction becomes 3 by 4. So this is your equation. Now you can solve this equation and get the result. So let's do the cross multiplication. 4x plus 12 is equal to 3x plus 24. So therefore, value of x is 12. X का वैल्यू आया है. Now this is not the number. You need to find out the number. So number क्या है? Number is numerator is x, denominator is x plus 5. So 12 plus 5 is 17.
So this is your answer. 12 upon 17. Varun is asking, this students clinic app is available in Gulf region also because I cannot find it on Play Store. Yes, it is available on everywhere. So you can easily download. Okay. Jay Lakshmi is asking, can we freely download Student Clinic app? Yes, it is free of cost. You can, of course, easily download and solve the questions, give tests, and lot more things. Okay. So this was question number one. Let's move with question number second. If thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to the present age. Now find the A's age. Now, such kind of language might be confusing, so you must be good at English also. Basic understanding of English is very, very much important. So now, जैसा question में बोला है वैसा हम equation को frame करेंगे, right? So if thrice of A's age 6 years ago is subtracted from twice his present age, then the result is equal to the present age. So सब कुछ बात किसके साथ में हो रही है? प्रेजेंट एज के साथ में. तो प्रेजेंट एज को हम लेट करते हैं x. लेट प्रेजेंट एज बी x years. प्रेजेंट एज को आपने कितना मान लिया? x. नाउ इफ थ्राइस ऑफ एज एज, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स किसकी एज? ए की एज. 6 years अगो. अगर प्रेजेंट एज x है तो उसकी एज 6 years अगो कितनी होगी? एज 6 years अगो. आज x है, 6 साल पहले कितनी होगी? x-6. इसका हमें क्या करना है? 3 टाइम्स करना है. सो 3 into x-6. ओके. तो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है. rise of age 6 years ago. इस चीज को हमने किस में लिखा है? मैथमेटिकल टर्म्स में लिखा है. इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे. और किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज. ट्वाइस मीन्स 2, प्रेजेंट एज इज x. So now you have to subtract this and result is equal to the present age. Present age कितना है? x. Now this becomes your equation. This becomes your equation. All right. Now let's simplify. 2x minus 3x plus 18 is equal to x. Okay. So therefore, what you are getting, 2x is equal to 18, x will be 9. Therefore, present age of A is 9 years. A का present age कितना है? 9 years. Divya has given the answer 9. Yes. Kinjal is asking what is the weightage of the chapter. It is normally 2 to 3 marks. All right. Okay. Then next try the third one. A number consists of 2 digits. A number consists of 2 digits. The digit in tens place is twice the digit in units place. Now, when there is a 2-digit number, now this place is known as units place and this is known as tens place. Okay, tens place and unit place. Let's say if the number is 21, so 1 is the unit place and 2 is the tens place, right? So number consists of 2 digits. The digit in tens place is twice the digit in units place. तो जो नंबर यूनिट प्लेस पे है उसका ये नंबर क्या है? ट्वाइस है. 1 का डबल 2. अगर यहाँ 2 है इट विल बी 4, 3 then it will be 6, 4, 8, 5 it cannot be 10 because it is 6. It is a 2-digit number.
तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 21, 42, 63 और 84। इनमें से कोई ना कोई नंबर हो सकता है। नाउ कौन सा करेक्ट होगा उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। नाउ अगर आप 21 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर गेटिंग 3, so this is not satisfied. 42 minus 18 gives 24. Yes, now the digits are reversed. पहले 4 2 42 था, now it is 2 4 24 है, digits are reversed. So what is the correct answer? 42. 42 is the correct answer. So this is the first method we have tried with hit and trial method. Option method कह सकते हैं इसको, hit and trial method कह सकते हैं. Okay, so in this way you can solve. This is the first method. Now the next one, अगर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, कंप्लीट मेथड से, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो, बट एग्जाम में दैट इज नॉट सजेस्टेड, वो मैं सजेस्ट नहीं करता आपको सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज यूज ऑप्शंस मेथड हियर, बट फिर भी लेट्स डिस्कस। अगर आपका x क्या है, इट इज द यूनिट प्लेस डिजिट। ये डिजिट कहाँ पे है? यूनिट प्लेस पे है। तो टेंथ प्लेस पे क्या नंबर होगा? उसका डबल होगा। तो प्लेस वैल्यू आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, लाइक 21 अगर नंबर है तो उसको प्लेस वैल्यू में कैसे लिखेंगे? वंस आपका यूनिट प्लेस पे 1 है, टेंथ प्लेस पे कितना है? 2 इंटू 10 20, सो 1 प्लस 20 बिकम्स 21। सिमिलरली इफ द नंबर इज 32, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 30 gives 32। इन दिस वे यू हैव टू राइट। सो देयरफॉर हियर आल्सो, यहां पर भी हमें पता है यूनिट प्लेस पे नंबर कितना है? x, टेंस प्लेस पे उसका डबल होगा 2x। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस x, दिस इज योर नंबर, दिस इज योर नंबर। इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं 18 से, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, then you will write 10x plus 2x. Now simplify this equation and you will get your answer. So 21x minus 12x is equal to 18. So therefore x is equal to 2. x का वैल्यू 2 है। Now what is the original number? Original number क्या है आपके पास? This is the original number. So 10 into 2x plus 2. Now simplify this, you are getting 42. So in this way, you can solve by the complete method. Okay. So what was my method? मेरा method क्या था? Simply मैं एक बार फिर से explain कर देता हूँ। Question ने simply कहा था जो नंबर यूनिट प्लेस पे है एंड दूसरा नंबर 10 प्लेस पे है, तो 10th प्लेस वाला नंबर क्या है? डबल, इट इज डबल। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहा है? इफ यूनिट प्लेस नंबर इज 1, 10th प्लेस इज 2। If it is 2, then it will be 4, 3, then 6, 4, then 8. Other numbers are not possible because it will become a 3-digit number. So these are the 4 possible options. Now, if you try subtracting 18, तो 18 subtract करने के बाद किसमें नंबर रिवर्स होता है? Only 42. It will become 24. बाकी सब में नंबर रिवर्स नहीं होता है। Therefore, this is correct. Okay. All right. Next one. For a certain commodity, the demand equation giving demand D in kilograms and price in P in rupees per kg. This is given. Demand equation is given in the question. That is 100 into 10 minus P. Now supply is S and price is P. So supply equation is also given. The market price is such at which demand is equal to supply. तो मार्केट प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? दिस यू विल बी डूइंग इन इकोनॉमिक्स आल्सो। इकोनॉमिक्स में आपका मार्केट चैप्टर है और मार्केट चैप्टर में हम वहां डिस्कस करते हैं व्हेन डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम,
एंड उस पॉइंट से हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर सेम चीज क्वेश्चन आपको दे दी है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो यू हैव टू इक्वेट दीज टू and find the value of price and quantity. Okay, so what is the value of demand? Demand is 100 into 10 minus P. What is supply? It is 75 into P minus 3. So it is demand equal to supply. Now simplify this. 1000 minus 100P is equal to 75P minus 225. So let's simplify this. So 1225 upon 75 upon 175 is equal to P. So therefore value of P will be 7. So P कितना आ चुका है आपके पास में 7. So this is the price. ये आपका price available है. Now if you want to find out the quantity, put in any equation. If you want you can put in demand. If you want you can put in supply. किसी भी एक equation में आप put कर दें. If you are substituting in demand, so 100 into 10 minus P. So what you are getting? 300. So this is your demand, 300 kilogram, and price is rupees 7. Okay. So इस क्वेश्चन में सिंपली जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा आपको इक्वेट करना है and you will get the answer. All right. So this is basically example number 4. Now, based on this, we are having the exercise. Now, you have to solve using option method. जो option क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट? एंड ऑप्शन मेथड में विद इन सेकंड्स यू कैन गेट योर आंसर. ओके, सो लेट्स चेक विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 की कंडीशन देखते हैं. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15. दिस इज द फर्स्ट इज 52. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. नाउ चेक किस ऑप्शन में सम 52 आ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिजेक्टेड, second is rejected, third is okay. Now, before selecting this option, check second condition also. Difference is 2. Yes, difference is 2. Now, option number C is satisfying both the condition. So, C is correct. C is correct. So, always question में जितनी भी condition दे रखी है, सारी आपको satisfy करवानी है. All right? Perfect. So everybody has done question number 1. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आ जाते हैं. Diagonal of a rectangle is 5 centimeter and one of the side is 4. Then find out the area. तो उसका एरिया कितना होगा. Now this is the question belonging to class 8th and 9th. क्लास 8th and 9th का एक क्वेश्चन है. फटाफट से एक बार आंसर बता दें. इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होने वाला है. यहाँ पे आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल and in this rectangle you are having this diagonal. Okay, what are the values? Diagonal is 5 centimeter and one of the side is 4 centimeter. Now you have to find out the area. So what is the formula of area of rectangle? याद है किसी को? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? It is very simple. Length into breadth. Length into breadth. Now question में length is available but this breadth is not available. So you have to find out this breadth first. तो पहले आपको एक rectangle का दूसरा side find out करना पड़ेगा. Now how you can find this? तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं Pythagoras theorem when there is a triangle. कौन सा triangle? Right angle triangle that is with 90 degrees. So you have to apply the Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is 5. So 5 square, base is 4, 4 square, and perpendicular is P, the P square.
Let's simplify. 25 minus 16 is p square. Therefore, p will be root of 9, that is 3. So what is the side? The other side of rectangle is 3. Now you can find out the area. So it is 4 into 3, that is 12 centimeters square. Okay, this is your answer. Option number B. Hello. Perfect. So most of you have given the answer. That's perfect. Now the next one, question number 3. Divide 56 into two parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48. ओके नाउ इस पैटर्न में आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वन बाय वन ऑप्शंस के साथ में चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग इज 56 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके तो सारे ऑप्शन का टोटल कितना आ रहा है 56, सारे ऑप्शन का टोटल कितना है आपका 56। ओके तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय ऑल। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स। लेट्स चेक विद ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 20 का 3 टाइम्स कितना होता है 60 एंड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 36 का 1/3 कितना होता है 12। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज 48 एंड क्वेश्चन ने क्या डिफरेंस दिया है, द क्वेश्चन ने डिफरेंस भी कितना 48 दिया है। सो ऑप्शन नंबर ए is able to satisfy the conditions, therefore A option is correct. तो सीधा सा A option correct. All right. So in this way you can easily solve by using options. तो options आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। Now the fourth one, the sum of the digits of a two-digit number is 10. Okay, two-digit number है और उसमें दोनों डिजिट का सम कितना है 10। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। नाउ चेक करें कौन से ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, these two are able to satisfy. Third option is not satisfying, so C is rejected. Now if 18 is subtracted from it, the digits in the resulting number will be equal, the digit will be equal। 18 आपको subtract करके चेक करना है। 37 minus 18 is 19, digits are different, they are not equal। 73 में से माइनस करते हैं, you are getting 55। Now the digits are equal, both the values are 5, therefore option number B is correct। B option absolutely correct। Okay, next is fifth, the fourth part of a number exceeds the sixth part by 4। Again try using options। fourth part मतलब 1/4, तो try with option number A first। 84 का क्या करना है आपको 1/4, इट इज हाउ मच 21। एक्सीड्स 1/6 पार्ट, तो 84 का 1/6 कितना होता है, इट इज 14। नाउ द डिफरेंस इज हाउ मच, डिफरेंस इज 7 एंड क्वेश्चन ने क्या बोला, डिफरेंस शुड बी 4, सो नो इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। 44 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, तो 48 को ट्राई करते हैं। So 48 का 1/4, how much? It is 12, and 48 का 1/6, it is 8। Now the difference is 4, therefore 48 is correct। 48 is correct। All right. This was question number 5. Let's try the next one.
10 years ago the age of a father was 4 times of his son. 10 years ago, 10 साल पहले की बात है, क्या रिलेशन है? 4 times of his son and 10 years hence, hence का मतलब 10 साल के बाद, the age of the father will be twice of the son. Find out the present ages. Again try using option. First one, 50 age of father, 20 age of son. 10 years ago, 10 साल पहले दोनों का एज कितना होगा? 50 minus 10 gives 40. 20 minus 10 gives 10. Now, is the age of father 4 times that of son? Yes, the ratio is 4:1. First condition is satisfied. Check the second condition also. 50 and 20. After 10 years, so plus 10, plus 10. What will be the age? 60 and 30. What is the ratio? 2:1. So therefore, second condition is also satisfied. So since both the conditions are satisfied, therefore, option number A is the correct option. So 50 and 20 is correct. All right. Any doubts still here? Next, 7. Question number 7. The product of two numbers is 3200. Now, first condition is to check the multiplication and product should be 3200. The first option is okay, second is okay, third is not okay. This is not 3200, and fourth is also okay. Now, check the second condition. The quotient when the larger number is divided by the smaller is 2. That means the division is 2. अगर आप दोनों numbers को divide करते हैं, you get the result 2. So let's see किसमें आपका result 2 आ रहा है. Let's check किसमें आपका result 2 है. 80 divided by 40 is 2. बाकी सब में 2 नहीं है. Therefore, option number D is correct. All right. This was question number 7. Next. Question number 8. The denominator of a fraction exceeds the numerator by 2. If 5 is added to the numerator, the fractions increases by unity, then find out the fraction. Now try this by yourself. एक बार इसको फटाफट से ट्राई करें, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. क्या लिखा है क्वेश्चन ने? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स न्यूमरेटर बाय 2. डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से. कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. नाउ चेक द ऑप्शंस. सारे ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है by 2. It is more by 2. Okay, so it is satisfied by all options. Now check the second condition. Is 5 is added to numerator, the fraction increases by unity. Now if you add 5, 5 कहाँ ऐड करना है? ओनली न्यूमरेटर में ऐड करना है, और उससे क्या होगा? जो फ्रैक्शन है वो यूनिटी से इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स सी हु ऑल हैव गिवन द आंसर. Himanshu Sharma has given option number D, 3/5. Anybody else who has given the answer or who wants to give the answer? Hello. Yes, Anush Kumar has given D. Paras Shah has also given D. Perfect. इस क्वेश्चन में एक सिंपल लॉजिक है. अगर आपको मैथ का बेसिक पता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1, राइट? नाउ इफ यू आर एडिंग 5 इन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट 1 आ जाए? डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट 1 आ जाए? ऑफकोर्स 5 होना चाहिए. और ये 5 कहाँ है? ओनली ऑप्शन नंबर डी के अंदर है. तो सीधा सा ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं आप. इफ यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक, अगर आप इस लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, देन आपको सारे ऑप्शन में ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है.
हमें पता है न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5, तो ऑफकोर्स 1 से ही तो नंबर इंक्रीज होगा, बाकी सब में 1 से ज्यादा या 1 से कम इंक्रीज होगा, बट जहां पे अपॉन में 5 है एग्जैक्टली 1 से ही चेंज आएगा। ओके, सो जिन्होंने पूरा सॉल्व किया है, 3/5 इज 0.6, 5 ऐड करने के बाद 8/5 बिकम्स 1.6, तो देयरफॉर डिफरेंस इज 1। ओके, तो ये ओवरऑल कंडीशन है किसकी, क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट, राइट नाउ द नाइन्थ वन। Three persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh, together have rupees 51. तीनों के पास टोटल कितना है, रुपीज 51। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, चेक करना है आपको क्या सबका टोटल 51 है या नहीं है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 रुपीज लेस देन मिस्टर रॉय, देन दे हैव द मनी। तो कौन सी क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिंपली चेक दिस। रिद्धि इज आस्किंग व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी इज 1। यूनिटी का मतलब सिंपली क्या है, 1। तो जैसे ही आपने 3 के अंदर 5 ऐड किया, अपॉन में भी कितना है 5, तो 5/5 मीन्स 1। तो ओवरऑल नंबर विल इंक्रीज बाय 1। ओवरऑल जो आपका नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, पहले कौन है, रॉय, देन पॉल एंड देन सिंह। ओके, नाउ मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, दैट मींस रॉय एंड पॉल में डिफरेंस कितना है, 4 रुपीज का डिफरेंस है। नाउ चेक कौन से ऑप्शन में 4 रुपीज का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर ए। 20 एंड 16 का डिफरेंस कितना है, 4। Now check the second condition. Singh has got 4 less than the Roy. Now Roy and Singh में difference कितना होना चाहिए, 5. So this is also satisfied by option number A. Therefore A option is correct. A option is absolutely correct. इसमें आपकी सारी condition fulfill हो रही है। Alright, तो जैसा question की language ने बोला है, just apply that thing. 10th one. A number consists of 2 digits. The digit in the tens place is 3 times the digit in units place. अब देखिए कंडीशन क्या है, digit in tens place is 3 times the digit in units place. अगर unit place पे 1 है then it will be 3, 2 है तो यहाँ 6 होगा, 3 है तो यहाँ पे 9 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। This is the first condition. If 54 is subtracted from the number, the digits are reversed. अगर 54 आप subtract करते हैं, फर्स्ट में आप 54 subtract करेंगे, it will go into negative, incorrect. सेकंड में 54 माइनस किया, this is also incorrect. थर्ड में अगर आपने 54 माइनस किया, you get 39. So yes, the digits are reversed. Digits are reversed. Therefore, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 93 is the correct answer. 93 is the correct answer. और इस केस में तो आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, बिकॉज आपको पता ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 31, 62 एंड 93। तो 31 इज नॉट इन ऑप्शन, 62 इज नॉट इन ऑप्शन, so therefore 93 will be correct. Okay, so for question number 10, option number C is the correct answer. Okay, next try question number 11. One student is asked to divide a half of a number by 6 and other half by 4, and then to add the two quantities. फिर क्या करना है, दोनों को add करना है। Instead of doing so, the student divides the given number by 5. उसने क्या किया, नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया। If the answer is 4 short, तो आंसर जो आया है उसमें 4 का डिफरेंस है। Then find out the correct answer that the number was.
So what is the correct number? This you have to find out. Chale, try by using the options. Try by using options. If you try with option number A, the number is 320. Question में क्या बोला? Divide half of the number by 6. So what is half of the number? 160. And other half is also 160. Now divide by 6. Divide by 6 and other divide by 4. Okay. And then you have to add them. So 160 upon 6, it is not properly divisible. So I think you will not get perfect answer with the help of this. तो आपको ऑलवेज पहले वो नंबर लेना है जो 6 से डिविजिबल है यहाँ पे. तो लेट्स ट्राई विद 400 is also not divisible by 6. 480 is divisible by 6 and half of 480 is also divisible by 6. So always try better option first. तो पहले 240 को 6 से डिवाइड करते हैं, you are getting 40. Next is divided by 4, you are getting 60. Okay. All right. So what you are getting? The sum 40 plus 60 gives 100. This is the first part. तो क्वेश्चन ने क्या कहा था? जो भी आपका नंबर है उसका हाफ डिवाइड करना है 6 से, सेकेंड हाफ डिवाइड करना है 4 से, एंड देन ऐड दीज टू नंबर्स. आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग 100. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 5, अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, देन व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 86. We are getting 86. Now, difference of these two is 4. Yes, difference is 4. That means all conditions are satisfied. So option number C is correct. So everyone has given the answer 480, option number C. All right. Okay, last one, 12th. If a number of which half is greater than 1/5 of the number by 15. जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ट्राई करें. A number of which half. तो पहले नंबर का क्या करेंगे? हाफ. ट्राई विद ऑप्शन नंबर ए. Half of 15 is greater than 1/5 of the number. So what is 1/5 of the number? 50 upon 5. So what is the difference? 25 minus 10. And the difference is 15. So condition is satisfied. So therefore option number A is correct. तो हाफ भी आपने किया, उसी नंबर का 1/5 भी आपको करना है, और फिर दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 15. इफ ऑल दिस इज सेटिस्फाइड देन द ऑप्शन इज करेक्ट. तो therefore option number A is absolutely correct. Okay. All right. So this is done. Now, next part is two simultaneous equations with two variables. So before moving forward, let's take a break of 10 minutes and then we will be continuing. Okay.
So welcome back, guys. So there was some doubt with question number 11. Yeah, see, in question number 11, the condition was जो भी आपको नंबर गिवन है उसका फर्स्ट पार्ट उसका हाफ डिवाइड बाय 6 करना है एंड देन डिवाइडेड बाय 4 करना है. So this was the first step. हाफ हाफ आपने कर दिया, डिवाइड कर दिया एंड देन ऐड देम. एडिशन इज 100. सेकेंड पार्ट इज डिवाइड 480 बाय 5. 480 को 5 से डिवाइड करना है, then what you are getting 96 and the difference should be 4. डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4. तो अगर डिफरेंस 4 आ रहा है that means the condition is satisfied. Okay, so therefore option number C is correct. So first two exercise we have done normal equation and then the word problem. Now it's time to solve for two variables, linear equation in two variables. So here two variables will be missing and we have to find out the values of those two variables. So for solving these two variables, there are many methods like simultaneous solving method, elimination method, or you can say substitution method, cross multiplication method. बहुत सारे method available हैं, but our best method will be option method. Best method क्या रहेगा? Option method. All right. Okay, Simran is asking, what about additional questions of first chapter? How to check answers is correct or not? Okay, so for first chapter, what we can do, we can keep some live classes on the application Students Clinic, and we will be discussing all the additional questions there. Okay, so no need to worry. We will discuss all the questions of additional question bank. All right. चलिए, तो फटाफट से शुरू करते हैं. Simultaneous linear equations in two unknown variable. So let's say equations is given 2x plus 5y equal to 9. This is the first equation. And 3x minus y is equal to 5. This is the second equation. Now, if we want to solve using substitution method, तो कैसे करना है? एक इक्वेशन में से एक वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. यू कैन डू विद x, यू कैन डू विद y, जो आपको इजी लगे उसके साथ कर सकते हैं. लेट्स से from equation number second, what I am seeing, 3x minus 5 is equal to 5 is equal to y. y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3x minus 5. ओके, अब मुझे ये y का वैल्यू पुट कर देना है कहां पे? इक्वेशन नंबर 1 में. इक्वेशन 1 में मैं इसको पुट करता हूं इन प्लेस ऑफ y. तो 2x plus 5 into 3x minus 5. So let's solve this. 2x plus 15x minus 25 is equal to 9. So 17x is equal to 34. Therefore, x का वैल्यू आ चुका है कितना? 2. X is 2. Now it's time to find the value of y. So substitute this value 3 into 2 minus 5. So therefore, y is equal to 1. तो दोनों वैल्यूज आ चुकी है x and then y. So this method is simply known as substitution method. Let's solve one more question. 3x plus 2y plus 17 is equal to 0. And second equation is 5x minus 6y minus 9 is equal to 0. Now this time let's try to eliminate any one variable, either x or y. किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है. Now कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? Let us understand. तो उसके लिए आपको कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा. If you check the coefficient of x, first equation में कोफिशिएंट 3 है, second में 5, they are different. Okay. If you check for y, it is 2 and then it is 6. Again, it is different. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा. तो सेम बनाने के लिए या तो आप x को सेम बना दें या फिर आप y को सेम बना दें. If we multiply the first equation by 3, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 6, राइट.
तो 9x plus 6y plus 51 is equal to 0. Now we can eliminate y. अब आप y को इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं. So let's add these two equations now. अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. Y will get eliminated. So what is left? 9 plus 5 is 14. X is equal to minus 42. So therefore, x will be minus 3. This is the value of x. This is using elimination method. अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, you will get the value of y. तो y का वैल्यू आ जाएगा. So let's substitute 3 into minus 3 plus 2y plus 17 equal to 0. तो 2y is equal to minus 8. Therefore, y का वैल्यू आ चुका है कितना? minus 4. Value of y will be minus 4. So these are the two values of x and y. Now, there might be three variables also. And in case of three variables, there will be three equations. और फिर उन तीनों equations को use करके आपको simplify करना रहेगा. Like what is the correct answer? So there are many different methods available, but the best method will be the option method. So सीधा हम चलते हैं आपके आगे क्वेश्चंस के ऊपर, एंड ये सारे क्वेश्चंस वहां पर भी आने वाले हैं. तो इन सबको हम डिस्कस करते हैं सीधा आपके एक्सरसाइज में, बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन देयर. Exercise C. Okay. Now there are two set of equations given. The solution of this set will be. तो इस सेट का क्या सोल्यूशन होगा ये आपको बताना है. Now try using options also. So let's substitute option number A. 1 and minus 1. 1 and minus 1 पुट करने से क्या आपका रिजल्ट 7 आ सकता है इन द फर्स्ट इक्वेशन? ओरली आप चेक कर सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. 3 into 1, 4 into minus 1, क्या रिजल्ट आएगा? -1. Of course this is wrong. But second option जैसे आपने ट्राई किया, 3 into 1 is 3, 4 into 1 is 4, and this is equal to 7. So option B is satisfying first equation. Also check for second also. Second equation is also getting satisfied. Therefore, option B is the correct answer. Okay. तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे वही मेथड्स हैं जो आप लोगों ने क्लास 9th एंड 10th में बहुत प्रैक्टिस किए होंगे. अगर किसी को और प्रैक्टिस करना है, अगेन आई एम सेइंग यू कैन ज्वाइन ऑन द एप्लीकेशन. वहां पे मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा, राइट, इन द लाइव सेशन ऑल्सो. डू नॉट वरी फॉर दैट. बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूज करना है ऑप्शन मेथड. सेकेंड वन. यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब आपको देना है. ट्राई करें ऑप्शंस एंड लेट मी नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कई बार इक्वेशन को देख के आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. इक्वेशन को आराम से देखें एंड यू माइट गेट एन आइडिया फॉर द करेक्ट ऑप्शन. जैसे फर्स्ट इक्वेशन को आपने देखा, x/2 plus y/3 gives 2. तो x और y का क्या वैल्यू हम रखेंगे जिससे रिजल्ट 2 आ जाए? तो x की प्लेस पे 2, तो 2/2 gives 1. y की प्लेस पे 3, 3/3 gives 1, and 1 plus 1 becomes 2. तो ऐसा ओरली भी कुछ अगर आप सोचेंगे तो आपका रिजल्ट फास्ट आ सकता है. लेकिन अगर आपसे ओरली नहीं हो पा रहा है, यू कैन ट्राई बाय राइटिंग द ऑप्शंस. ओके. यस, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. So 2/2 plus 3/3. So it gives 1 plus 1, 2. So therefore, C option is correct. Similarly, you can try with question number 3 also. X and Y की प्लेस पे क्या रखें जिससे फर्स्ट इक्वेशन में 2 आ जाए?
सो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर निकलना चाहिए। क्या पुट करेंगे? x की प्लेस पे p, y की प्लेस पे q। सो p by p plus q by q gives 2। Option condition 1 and similarly condition 2 is also getting satisfied. Therefore, option A is correct. Fourth का option number A is correct. Then try for question number 5. Sorry, question number 4. Question number 4 पहले try करें and let me know the answer. देखिए कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी, जितना आप ओरल प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में आप फास्ट पेपर अपने अपियर हो पाएंगे, राइट? सो 1 डिवाइडेड बाय 16, x की प्लेस पे एक वैल्यू रखनी है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15, y की प्लेस पे दूसरी वैल्यू रखनी है, एंड इट शुड गिव यू 9/20। तो क्या पुट करें? एक ऐसा नंबर हो जो 16 से डिविजिबल हो और दूसरा नंबर जो 15 से डिविजिबल हो। लेट्स ट्राई विद 1/4 एंड 1/3। सो क्या रिजल्ट आएगा ऑन कैंसलेशन? 1/4 प्लस 1/5, LCM is 20, so we are getting 9/20 with option number A। तो फर्स्ट ऑप्शन ने ही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, और जहां पे एक ऑप्शन एक कंडीशन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मान के चले वही सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बट फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ओके, इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रॉस चेक। तो हु ऑल हैव गिवन द आंसर? Geeta has given, then Rani Prasad, Himanshu, Kritika, Anuj, Simran, Avni, Rohini, Anada, Nancy, Priyanka, everyone has given the answer. Perfect. So fourth is done. Now again try for question number 5. Put the option and give the answer. ऑप्शन रखिए और बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है। जो इक्वेशन आसान लगे ट्राई दैट इक्वेशन फर्स्ट, जो इजी लग रही है उसमें वैल्यू पुट करें, it will be always better. So 3xy and then 10 into y minus x, they are equal. So y में से x माइनस करना है, तो y should be greater. y क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ पहले ट्राई करें। ट्राई विद ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट। 3 into 2 into 5 is equal to 10 into 5 minus 2. So what you are getting? 30 on left hand side, 30 on right hand side. So equation is getting satisfied. So option number D is correct answer. So 2, 5 is the perfect answer. Okay. Next. Question number 6. The pair satisfying the equation. Which pair is satisfying the equation? Sixth में कौन satisfy करता है? Again, the simple equation is the first one. Try with the simple one. X plus 5y equal to 36. ये ऑप्शन ट्राई किया आपने, 16 plus 5 into 4, it gives 36. Yes, option number A is satisfying. Therefore, you can select option number A. Option number A is the perfect answer. All right. Now, question number 7. Again, two equations are given. You have to check which one will give the correct answer. x4, y12, x12, y4. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
Question number 7. So according to first equation, if you see x में से अगर 3y लेस करते हैं you should get 0. Therefore इसको देख के पता लगता है x का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. कितना ज्यादा? 3 टाइम्स होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी से ट्राई करें. 12 minus 3 into 4. You are getting 0. Therefore option number B is correct. So B option आपका हो जाता है correct. Yes. So Anuj has given the answer. Rani, Kinjal, Nancy, Geeta, Preeti, Kritika, Manthan, Divya, Varun, Saudagar, Anaga, Hema. Yes, everyone has given the answer. Perfect. That's great. So question number 7 is done. Then comes question number 8. So I think you can try this by yourself. This is easy. Similar question, question number 8, question number 9. Now try question number 10. Try question number 10. Which is the correct option? Now, x3 upon x plus y and 2 upon x minus y, the result is 3. तो रिजल्ट 3 कैसे आएगा? कौन बड़ा होना चाहिए, x या फिर y? इस केस में अगर आप देखें तो x अगर बड़ा होगा तो आई थिंक इट विल बी बेटर. सो लेट्स ट्राई विद ऑप्शन नंबर डी. डी ऑप्शन के साथ पहले ट्राई करते हैं. तो अगर आप ये चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है, ट्राई ऑलवेज दैट थिंग. अगर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ट्राई इन सीक्वेंस. बट अगर आपको आइडिया लगता है, इफ यू हैव द हिंट कि ये ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, तो ऑलवेज ट्राई विद दैट ऑप्शन फर्स्ट. लेट्स ट्राई विद डी. 3 अपॉन 2 plus 1 plus 2 upon 2 minus 1. What is the result? 1 plus 2 gives 3. Therefore, D option is correct. D is your correct answer. All right. So exercise number C is completed. Now it's exercise number D and then word problems. Okay. So let's solve few questions from D as well. So let's try the 3 variables. 2 variables we have done. So question number 3. Let's try question number 3 from exercise number D. Okay. Now, see, the first equation is very, very simple. What it says, x by 4 is equal to y by 3 is equal to z by 2. तीनों प्लेसेस के बीच में क्या लगा है? इक्वल टू लगा है. तो x, y, z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है 4, 3 एंड 2 और 8, 6 एंड 4. मतलब इनके मल्टीपल में ही आंसर होगा. तो चेक कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है. ऑप्शन नंबर ए, 4, 3 एंड 2. So as soon as you put 4, it becomes 4 by 4, 3 by 3, 2 by 2. So everything is 1. So therefore, option number A is the perfect answer. Yes. So everyone has given option number A. That's correct. The next one, xy upon x plus y equal to 20. Yz upon y plus z is 40. Zx plus z upon x is 24. So again, check the condition. Check the condition. कंडीशन पहले चेक करेंगे, उसके बाद आंसर देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा. सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन. फर्स्ट ऑप्शन के साथ में ट्राई करेंगे. x इज 160 एंड y क्या हो जाएगा? 60. सो 120 इंटू 60 अपॉन 120 प्लस 60. सो व्हाट इज द रिजल्ट? 120 into 60 upon 180. So we are getting how much? 40. No, but this is not 40. ये 40 नहीं है. So therefore option number A is wrong. Option number A is wrong.
ट्राई विद ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ ट्राई करते हैं। 60 and 30, 60 into 30 upon 60 plus 30. So this time we are getting how much? 20. So yes, first equation is getting satisfied. First equation is satisfied, but सिर्फ एक इक्वेशन से आपको आगे नहीं बढ़ना है, चेक अदर इक्वेशंस आल्सो। बाकी इक्वेशन को भी आपको चेक करना है। अभी हमें ये पता लग गया x और y का वैल्यू 60-30 में से कुछ होगा, लेकिन इट विल बी 60-30 और 30-60 कौन सा होगा, ये आपको जज करने के लिए सेकंड इक्वेशन को भी टेस्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स टेस्ट द सेकंड इक्वेशन आल्सो, yz अपॉन y प्लस z। so what is y? 30 into 120 upon 30 plus 120. So this time it is 4 and then 5. So 6 into 4 gives 24. So second equation is not getting satisfied. So option number B is wrong. So ultimately option number D will be correct. So D is your final answer. So आपको B देखते ही पता लग गया, या तो B सही होगा या D सही होगा। C is outrightly rejected. Okay. So whenever there are three variables, just do not accept with one condition. At least you have to check the two conditions. अगर two conditions satisfy है, तो फिर आप आंसर के साथ proceed कर सकते हैं, otherwise not. Okay. So let's try with question number 5 also. चलिए 5 को try करें। सबके आगे लिखा है 0। तीनों इक्वेशंस में रिजल्ट क्या लिखा है? 0। तो क्या पुट करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, तीनों इक्वेशंस का रिजल्ट क्या है? 0। So what shall we substitute? क्या सब्सिट्यूट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, 0 0 एंड 0। ये पुट करते ही आपकी सारी इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। ओके। Then the next one, I think 6 is similar. You can try. Let's try this question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करते हैं। x अपॉन 0.01 प्लस y प्लस 0.03 अपॉन 0.05। सो दोनों तरफ ये इक्वेशंस गिवन है आपको, एंड द ओवरऑल रिजल्ट शुड बी 2। रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। सो चेक एंड लेट मी डू द आंसर। वैसे इक्वेशन को अगर क्लियरली देखें तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो लेट्स ट्राई विद द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के साथ में ट्राई करते हैं, जिससे आपका आंसर इजीली आ सकता है। अब देखें x के डिनोमिनेटर में क्या है? 0.01। तो अगर x का वैल्यू भी 0.01 होगा, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल एंड यू विल गेट 1। तो ऑलवेज ट्राई विद सच ऑप्शंस। ऐसा ऑप्शन के साथ में ट्राई करते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी। तो ट्राई विद ऑप्शन सी फर्स्ट। x अपॉन 0.01 प्लस y की प्लेस पे कितना है? 0.02 प्लस 0.03 divided by 0.05. Now at both the places you can see what we are getting, 1 plus 1. Result is 2. So therefore option number C is the correct option. C आ गया आपका correct option. All right. So this is the best method and the easiest, quickest, simplest method to solve the questions. So 9 and 10 is similar. I think you can do it easily. Now important is the word problem, because word problem में language आती है, तो language को कैसे समझना है, कैसे apply करना है. So let's focus on the language now.
इलस्ट्रेशन नंबर 1 को पढ़ते हैं, थोड़ा आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आपको 2-3 बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग. If the numerator of a fraction is increased by 2, okay, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया है 2 से एंड डिनोमिनेटर बाय 1, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है 1 से. क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. दैट मींस देयर वैल्यूज आर डिफरेंट, बोथ द वेरिएबल्स आर डिफरेंट. सो वी कैन टेक न्यूमरेटर as x, denominator as y. So the fraction will be x upon y. Now what you have to do, increase the numerator by 2 and denominator by 1. So as per this first statement, हमने इसको mathematically लिख दिया है, x plus 2 upon y plus 1. Then it becomes 1. So this is equal to 1. This becomes our first equation. Then again, if numerator is decreased by 4, now this time we have to decrease the numerator and denominator by 2. So y minus 2, it becomes half. The result is half. This is your second equation. Find out the fraction. So now we have to solve the equation and find the fraction. So here also you can put the option and check the correct answer. Okay. So x plus 2 is equal to y plus 1. Therefore, x minus 1 plus 1 is equal to 0. And for the second equation, it is 2x minus 8 equal to y minus 2. Therefore, 2x minus y minus 6 equal to 0. So these are the two equations. Now you can simplify these two equations and get the answer. Okay, so let's try with the normal addition method. Now, since we have to subtract, change the sign, minus, plus, plus. जब भी दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज. तो y is getting cancelled with y. What is left? Minus x is equal to minus 7. So therefore x is equal to 7. x का वैल्यू आ चुका है 7. Now find out the value of y. Okay, so let's put in the equation. इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. 7 plus 2 minus 1 equal to y. Therefore y is 8. तो x and y दोनों का वैल्यू आ चुका है. Now the fraction is x upon y, that is 7 upon 8. So this is the required fraction. All right. So in such cases, it is important to form the equation, and equation form करने के बाद you can try with options. Okay. Now the second one, the age of a man is 3 times the sum of ages of his 2 sons, and 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Then find the present age of man. Okay. So what we can assume, age of man, let the age of man be x years and sum of ages of 2 sons should be y. तो y क्या है, दोनों सन की एज का सम है y. Now as per the first condition, age of man कितना है, 3 times the sum of age of the sons. So man is x, 3 times of sum. So x is equal to 3y. This is our first equation. Then for second, 5 year hence, 5 साल के बाद. So after 5 years, age of men will be plus 5. And what will be the age of 2 sons? First son will increase by 5. Second son will also increase by 5. Okay. And in that case, let's write this is the age of man and this is the sum of 2 sons. Now what is the condition? His age will be double the sum of ages. Okay. This time the condition will be x
plus 5 is equal to double. So you have to double this time, and here it is simply sum of ages will be y plus 5 plus 5 because 3y तो आपका first equation में था. Second equation में it is only y plus 5 because we have treated only y as the sum. Okay. So man का एज कितना है x plus 5. Son की एज का सम कितना है y plus 5 plus 5. Now according to condition, age of man is double the age of son. It is double the age of son. Now simplify this, you will get the second equation. So 3x plus 5 is equal to 2y plus 20. 2y plus 20. Now, if we use the first equation here, what is the first equation? X is equal to 3y. Just put 3y here. So what you are getting? Y is equal to 15. Y is equal to 15. So this is the sum of ages. But we require age of men. That is the value of x. So x is equal to 3y. Therefore, 3 into 15 gives 45. So age of men will be 45 years. Men's age will be 45 years. Okay. So let's discuss once again. इस क्वेश्चन में एज ऑफ मैन को हमने माना है कितना x एंड एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ द टू चिल्ड्रन उसको हमने क्या मान लिया है y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन मैन की एज सन के 3 टाइम्स एज के बराबर है. तो x इज इक्वल टू 3y. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेकेंड इक्वेशन के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला 5 इयर्स के बाद. तो आफ्टर 5 इयर्स मैन का एज कितना हो गया x प्लस 5 एंड आफ्टर 5 इयर्स सम ऑफ सन्स एज वो कितना होगा y प्लस 5 प्लस 5 बिकॉज देयर आर टू सन्स. तो प्लस 5 कितने बार होगा 2 टाइम्स होगा. सो सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस 5 इज डबल सो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10. इस इक्वेशन में हमने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड गॉट द आंसर. Okay. Now the third one, a number consists of 3 digits of which the middle one is 0. Now the middle term is 0. Sum of other digits, बाकी जो दोनों numbers है उन digit का sum कितना है 9. So the numbers formed by interchanging the first and third digit is more than the original number by 297. तो अगर हम दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर दें तो डिफरेंस कितना आता है 297. ओके. नाउ सी अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन. अगर आप इसको बिना इक्वेशन के सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा. मिडिल नंबर इज 0 एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 9. so it will be 108, 207, 306 और 405. बस इतना ही पॉसिबिलिटी है. आगे बढ़ेंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे रिवर्स हो जाएंगे. ऑलराइट. नाउ अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला. द नंबर्स फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297. इफ यू इंटरचेंज देम तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 297. तो 801 को माइनस करेंगे तो 297 नहीं आएगा. 702 को माइनस करने पे भी नहीं आएगा. बट 603 को आप माइनस करेंगे यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ 297. Therefore, option 306 is the correct answer. तो ऐसे क्वेश्चन बिना इक्वेशन के लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा. ऑलराइट. परफेक्ट. ओके. सो एक्सरसाइज नंबर ई.
एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने ऑलरेडी कवर किया है इन द चैप्टर रेशियो. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद सेम फिगर्स. सब कुछ हमने सेम कर रखा है इन द चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन. सेकंड, find the fraction which is equal to 1 by 2 when both its numerator and denominator are increased by 2. अगर आपने दोनों को 2 से इंक्रीज किया तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए? हाफ. एंड इट इज इक्वल टू 3 by 4 when both are increased by 12. ओके, तो ऑप्शन के साथ चेक करें. ट्राई द फर्स्ट ऑप्शन. 3 by 8, दोनों में +2 आपने किया, what you are getting 5 by 10, that is half. So first condition is satisfied. If you add 12, it should come 3 by 4. So 3 plus 12 and 8 plus 12. So 15 upon 20, on cancellation, you are getting 3 by 4. So option number A is absolutely correct. Sanya is asking, paper will be subjective, right? No. Your paper will be objective. That's why you have to use options, because for every question you are having just 60 seconds. एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ओनली 60 सेकेंड्स अवेलेबल है. ज्यादा लिखने का आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई आवर रिकमेंडेशन इज टू सॉल्व यूजिंग ऑप्शंस. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन अबाउट, जो भी हमने ऊपर एग्जांपल में किया है. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. फोर्थ, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4. A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits. अब इस फर्स्ट स्टेटमेंट को आराम से 2 से 3 बार पढ़ें एंड सोचे क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा है. तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? अ नंबर इज बिटवीन 10 एंड 100. कोई भी नंबर है 10 से 100 के बीच में, इट मींस इट इज अ 2 डिजिट नंबर. नाउ वो नंबर क्या है? इट इज 5 टाइम्स. किसका 5 टाइम्स? ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. अपने सम का 5 टाइम्स के इक्वल है. तो लेट्स चेक द कंडीशन. 54. सो 5 plus 4 is 9. 9 का 5 टाइम्स कितना होता है? 45. So this is wrong. The condition is not satisfied. Same with B, not satisfied. But C में अगर आप चेक करते हैं, 4 plus 5 is 9 and 5 times करने पे कितना आता है? 45. So first condition is satisfied by option number C. If 9 is added, अगर इस 45 में 9 को add करते हैं, then the digits are reversed. Yes, the digits are reversed. It becomes 54. So therefore, option number C is correct. C is correct. Okay. So Rajesh Kumar is asking, MCQ कितने मार्क्स के आते हैं? So it is 100 marks paper with 100 MCQ, 1 marks each. Okay. And 120 minutes will be available. And you have to fill the OMR sheet. Circle आपको fill करने पड़ेंगे. It will also take time. So on an average, 1 minute per question will be there. So one question is equal to 60 seconds. तो 60 seconds में आपको पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ऑलराइट. ओके, सो नेक्स्ट 5. The wages of 8 men and 6 boys amount to 33. 4 men earn 4.5 more than 5 boys. Determine the wages of each man and boy. So again, try using options. तो मैन एंड बॉय, सारा चांसेस क्या है कि मैन की सैलरी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉय. तो ट्राई दैट ऑप्शन फर्स्ट.
तो ऐसे ऑप्शन हमारे पास बी एंड सी अवेलेबल है। तो पहले बी ऑप्शन के साथ में ट्राई करते हैं, बिकॉज मैन की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। ट्राई विथ बी। 8 men, so 8 into 3, 6 boys, 6 into 1.5. So what is the result? 24 plus 9, 33. Perfect. So option number B is correct. तो कई बार आपको सारे ऑप्शन अप्लाई नहीं करने हैं, जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉजिक यू कैन गेट योर आंसर। Okay, next one. This we have already done. Similar questions. 7. Let's try the seventh one. Of two numbers, 1/5 of the greater is equal to 1/3 of smaller, and their sum is 16. Find the numbers. तो 1/5 ऑफ ग्रेटर, तो ऐसा नंबर लें जो 5 से एंड 3 से डिविजिबल हो, ऐसा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ट्राई विथ फर्स्ट ऑप्शन। तो 1/5 ऑफ ग्रेटर नंबर, विच इज ग्रेटर 10, तो 1/5 इज 2। 1/3 ऑफ स्मॉलर, 6 का 1/3 इज ऑल्सो 2। ओके, so they are equal. So yes, they are equal. The condition is satisfied. What is the second condition? The sum should be 16. So 6 plus 10 is 16. Therefore, option number A is correct. Okay. A option is the perfect answer. Now try the eighth one. Eighth आपको try करना है. Y is older than X by 7 years. This is the first condition. Y is older than X by 7 years. तो चेक करें, Y की एज ज्यादा होनी चाहिए 7 से। फर्स्ट ऑप्शन में ज्यादा है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में ज्यादा है, फोर्थ में ज्यादा है। ओके, सो बी इज रिजेक्टेड। सेकंड कंडीशन, 15 years back X age was 3/4 of Y's age. तो 15 आपको माइनस करना है दोनों में से। चेक विद ऑप्शन नंबर ए। 36 minus 15 upon 43 minus 15. So 21 upon how much? 28. If you cancel by 7, you are getting 3 by 4. Yes, 3 by 4 is correct. Therefore, option number A is the correct answer. So X age is 36 and Y's age will be 43. So option number A is absolutely correct. Few more questions for the today's session, and then we will be winding up. So let's try again. The next question number 9. The sum of digits in a 3-digit number is 12. Sum कितना होना चाहिए? 12. तो कौन सा ऑप्शन में sum 12 आ रहा है? You can see that all numbers are comprising 2, 3 and 7. So therefore sum 12 is followed by everyone. सारे ऑप्शन का sum कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, because सभी में 2, 3 and 7 अवेलेबल है। तो first condition is satisfied by everybody. Second, if the digits are reversed, the number is increased by 495. पहले इस कंडीशन को चेक कर लें। 327 एंड 723, क्या डिफरेंस 495 का है? नो। सेकंड ऑप्शन, 372 एंड 273, नो। देन 237 एंड 732, 237 and 732.
Yes, this time the difference is 495. And the last one, 273 and 372. No. So only C option is satisfying the condition. Therefore, C is correct. Last line आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उसके बिना आपका आंसर आ सकता है. But if you want to check the last condition also, so reversing only the tens and unit digit increases the number by 36. तो अगर आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आपका रिजल्ट डिफरेंस कितना आएगा 36 का. तो 37 and 73 difference will be 36. This condition is also satisfied. Therefore, C is the correct answer. All right. Then question number 10, similar we have done. So you can try with question number 10 yourself. And let's do the last one, question number 11. Question number 11. The demand and supply of a certain commodity is given, and where P is the price, Q is the quantity. You have to find out the equilibrium price and quantity. So this we have discussed. For equilibrium, what is the condition? Demand is equal to supply. So you have to equate these two equations. दोनों equations को आप equate कर देंगे and get the answer. So solve these two equations simultaneously, you will get the answer. That means you can even put the option and check which option is satisfying the equation. कौन सा option equation को satisfy कर रहा है? That will be your correct answer. All right. So come on everyone, let me know the answer for this last question, question number 11. उसके बाद आपका सेशन वाइंड अप हो जाएगा. फटाफट से बता दें इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर. P and Q का वैल्यू क्या होगा? क्या सब्स्टिट्यूट आप करेंगे जिससे आपका रिजल्ट ये आने वाला है? ट्राई विद ऑप्शन नंबर ए. ये ऑप्शन ट्राई करें. तो 4Q + 7P सब्स्टिट्यूट करते वक्त आपको ध्यान रखना है इक्वेशन में पहले Q लिखा है और बाद में P. So 4 into 3/4 plus 7 into 2. You are getting 17. Therefore, option number A is satisfied. A option आपका satisfy हो चुका है. Anuj has given the answer. Nishi, Renuka, Nancy, Anil, Hema, Geeta, Anuj, Saudagar, Preeti. Yes, everyone is given option number A. That's perfect. So I think everything is done till here. Exercise E तक हमने complete कर लिया है. So linear equations in 1 variable, 2 variable, and 3 variable is completed now. We have also covered word problems today. Now in the next session, that is on Monday, we have to start with the next topic, that is quadratic equation when the power is 2 and the power is 3, that is the cubic equations. तो उन equations को हम कैसे solve करते हैं, that we will be doing on Monday. So till then you can practice more questions on this topic. जितने भी सारे questions किए हैं इन्हें आप दोबारा करें. Also you can practice on the application students clinic. वहां पर भी आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे extra questions so that you can practice more. All right. So bye everyone. Take care and see you in the next session.